हाय गाइस व्हाट्स अप दिस योर बॉय अनिल ब्लेस बैक विद द व्लॉग। थैंक यू सो मच बहुत सारा प्यार देने के लिए। पहले दो व्लॉग्स को सक्सेसफुली दो व्लॉग्स डाल दिए हमने। तो ये व्लॉग में आप देखोगे मैंने कहाँ से पीसी ख़रीदा था और कितने पैसे लगे मुझे पीसी ख़रीदने में और क्या क्या अपग्रेड मैंने किया पीसी में। दिस वॉज नीडेड फॉर मी इन 2024। ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट है मेरे ऊपर सो दैट आई कैन वर्क ऑन मोर थिंग्स एंड प्रोवाइड विथ गुड व्लॉग्स, गुड एडिटिंग एंड मच मोर कंटेंट। तो लास्ट तक देखिए, मज़ा करिए। थोड़ा टेक्निकल रहेगा बट यू विल एंजॉय इट। लेट्स गो। सिटी से आ गए हैं लेनोवो मार्केट के बाजू ऑपोजिट में। इफ यू गो इनटू दिस गली यू विल हैव विशाल विशाल कंप्यूटर ये क्या है? प्राइवेट लिमिटेड। विशाल पेरिफेरल्स का और एक स्टोर है ये। सो आई हैव कम हियर to take the brand new CPU. This is our cabin, guys. These are our products which will be going into that. Buying new PC in 2024 January. This will be extraordinary for me. I have always wanted this one so that I can stream, I can play, I can edit, can do lots of things. मस्त प्लान है। क्या लाइटिंग है भाई, lighting is very good here. So I will give all the specification details when I go to home because यहाँ पे ज़्यादा not understanding what to tell you guys. So I'll give a whole specifications video when I go home. Let's go. In future, pray to God that this will be my setup. CPU man, what is this CPU bro? This is water guys. Finally the purchase is done guys. 40k investment लगाया है 40k. So let's see is it worth that much or how it is gonna be in the coming days. Successfully completed our purchase of a CPU, mid-range gaming or mid-range performance you can say. बहुत खर्चा हो गया जनवरी मंथ में 2024 में। टिकट्स लेने आए थे, सीपीयू लेके जा रहे हैं। लेट्स गो लेट्स गो। पैसे वालों की प्रॉब्लम। हे हरि राम, हे प्रभु, ये क्या हुआ? एंड वी आर गोइंग टू चाइनीज बंडी नाउ। वहाँ पे टेस्ट करते हैं कैसा है। लेट्स गो। This is my graphic card, Radeon 580 AMD का है। So this one is the cooler AMD Sports which cools the
विच कूल्स द प्रोसेसर, उसके लिए थे है ये, एज यू कैन सी फ़ैन भी है। एंड दिस इज़ माई मदरबोर्ड। यहाँ पे कहीं लिखा था भाई इसका नाम, हाँ, प्रो H50MB। सो दैट इज़ माई मदरबोर्ड। सो आपको ये कहाँ पे डालना है वो दिखाना था मेरे को। सो यहाँ पे मेरा ग्राफिक कार्ड था ऐसे, लाइक दिस वाज माई ग्राफिक कार्ड लाइक दिस। सो आई वाज नॉट एबल टू सी एनीथिंग वेयर टू कीप द SSD एंड ऑल। बट मैंने थोड़े वीडियोस देखे, उसके बाद मुझे पता चला कि ये यहाँ पे आएगा। इफ़ यू सी दिस वन, यहाँ पे आएगा, इसमें डालने का है। और इसके साथ मुझे एक स्क्रू भी आया छोटा सा, वो स्क्रू भी यहाँ पे, आई थिंक इट विल फिट। सो लेट्स चेक। And this is 500 GB SSD guys. You can take 256 or 1 TB, anything. So I already have an hard disk of 1 TB. So hard disk 1 TB का रहने पर मुझे 1 TB का SSD ज़रूरत नहीं पड़ा। 500 GB भी I think it's lot, but in the coming future if I need it for anything else I can shift it there. That's why मैंने ये लिया था। So यहाँ पे नट आएगा, नट नहीं बैठेगा भाई, ये बहुत छोटा है भाई, नट दूसरा लगाना पड़ेगा। This is very small for that. Will it fit, bro? Let me check. I'll check and update you guys. So guys, जो स्क्रूज मुझे CPU के साथ आए थे वो स्क्रू से लगा दिया। इट इज़ लिटिल स्लैंट, थोड़ा ऊपर लगाया मैंने फिर भी। टेस्ट करते हैं if it is able to detect it, and we have to keep our graphic card. I wanted GTX NVIDIA, but एक्सपेंसिव ब्रो। लेट्स सी, फ्यूचर में ले तो लेंगे। अभी ग्राफिक कार्ड जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, उसके बाद विल स्टार्ट द CPU एंड चेक। Unboxing of CPU is done, so we move on to our Samsung G3 Odyssey monitor. या हमने मॉनिटर भी खरीदा है और उसके डिटेल्स आपको पता चल जाएंगे। लेट्स सी। Hey guys, we have our Samsung monitor. We have set up the CPU, but we have our new monitor Samsung G3 Odyssey, which is FHD and 165 Hz refresh rate, 1 ms response time. So we bought this because it was coming at a decent price, and we are gonna unbox it right now. Let's go. So inside the box we have this adapter, pin adapter, which can be plugged into the monitor. This is the extension wire of this adapter. Keep that aside. The stand, ऊपर नीचे कर सकते हैं स्टैंड से। Base, this is the base which will hold the stand. Now check the monitor. Checking for any damage, because we will return it if there is any damage. So far I'm not finding any, but there is some. Okay. So this is the monitor guys. We will set this up with the stand. Let's go. How to do this? You just check the side first. So this should be coming like this. Firstly do the above one, because the below one you have this type of spring, so that you can do this and it will go inside, and you have your And okay. This will be at last, because you can fit it in. sorry like this. There has been given a screw. Also make sure whenever you place the monitor, the surface is clean and smooth, so the screen won't get damaged. So this is our monitor guys. So you can rotate it like this, horizontally, also rotate. This was main purpose of taking this Samsung monitor, because horizontal and vertical both are there,
and also this is the 165 hertz. The other monitors which have same hertz, same money or price won't be having the horizontal and vertical thing. And also this is height adjustable. We can adjust the height of this monitor. Come in close, please. Come on. So this can be height adjustable like this. As you can see, there is much gap now, and you can also move it up, move it down, move it up. So these are the things coming with this monitor, Samsung Odyssey G3. These are not coming with the other monitors which I have checked in the same price range. There is no horizontal or vertical, or there is no height adjustable. So that is the main reason I took this. Are other features also, but this holds a price. I mean, this holds a good. What do you say? बहुत अच्छा काम का चीज़ है. Moving like this and also height. So let's set this up with the CPU and check how this is working. And such settings you can change in the monitor. I mean, in the settings of the computer. Then we'll go into the menu of the monitor here, which is on the bottom of this monitor. As you can see, if you click this button here, then you can see these are the menus. हमारा तो HDMI है अभी. So what is the difference between HDMI and digital port? So this is a digital port which they have given with the monitor. So ये digital ports थोड़ा HDMI से थोड़ा अलग है. So using this only you will get 165 Hz on the monitor as they have said in the manual. Manual एक बार पढ़ना चाहिए आपको जो कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो. तो ये डिस्प्ले पोर्ट तो हमारे जीपी में फिट नहीं हो रहा था. कोई तो भी जुगाड़ करेंगे, ऑनलाइन में मिल जाएगा तो लगाने के लिए. अभी के लिए HDMI लगाया है. HDMI only supports 144 Hz and with the display port you will be able to support, the monitor will be able to support 165 Hz. So we are sticking to 144 Hz now. We'll go to the menu here again. The menu options in Samsung Odyssey G3. So here the black equalizer is 13, the response time is 1 ms, one refresh rate is 144, FreeSync is on and iServer mode is off. You can check the details on the above also, which are main. Those will be shown here. I'm gonna be using this for a while and will let you know if anything changes with the monitor. But for now, I think it looks good. And this is 24-inch, so it's good to work on. 27-inch will be wider, but this was my option. 24-inch will be better suiting for me. So if you want this monitor, check the link in the description. I'll be giving the link in the description, so you can buy it from there. This is my first monitor purchase, and this is my first CPU purchase. माउस कीबोर्ड तो रहेगा, कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, बट विल चेक. अगर वो भी नया लेना है तो देखेंगे, दूसरा कुछ है तो. सो ये हालत है अभी बेड की. आई हैव टू पैक ऑल दिस. एंड मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, सो अमेज़ॉन का लिंक दे दिया है. सो लेट्स गो. इसमें थोड़ा देखते हैं प्रोस एंड कॉन्स कुछ निकलते हैं या कुछ कर सकते हैं या नहीं. स्पीकर बता रहा था भाई, मैंने सोचा स्पीकर आएगा बट नहीं आ रहा है. नाउ वी आर गोना टेक सम स्पीकर्स, गुड वॉल्यूम स्पीकर्स बेस के, और उससे काम करेंगे. सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस विद द अनबॉक्सिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. नॉट लॉन्ग टाइम अनबॉक्स किया है हमने. थोड़ा टेक्निकल चैनल भी हो रहा है अपना. ब्लॉग थोड़े कम हो रहे हैं भाई, बाहर जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. सो दैट इज़ दैट गाइस. This is our unboxing video. This is our monitor and all. The unboxing video is finished. The unboxing is finished. So let's go. Again, please like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. So last thing guys, प्राइस बताना तो भूल ही गया मैंने. So मैंने ये मॉनिटर in the price range of 10,899 में लिया था. मुझे कुछ ऑफ़र मिला था and some bucks were off. So 10,899 is the purchase price of this monitor. But आपको ये monitor if you see in the Amazon, Flipkart or any other website 12,399 और 499 में मिलेगा. So मुझे reduced down to 2,400 और 3,000 मिला है on this monitor. उतना ऑफ़र मिला है मुझे 3,000 का. And also if you are using some credit card and all, you will get some 500 to 600 off. So 10,899 में मैंने लिया था. अगर आपको भी ये ऑफ़र चाहिए, गो टू द लिंक बिलो, परचेज इट राइट नाउ. बाय बाय.
बाप रे, अरे बाप रे।